Hare Krishna. So today we are going to present a small drama on today's theme, that is the secret of loving relationships. So basically everyone has different relationships, like maybe friends, siblings or whatever it is. So to pour love into it and to make it genuine, what would be the ingredients to make it a beautiful relationship? We are going to look at that with the Krishna Leela in that. So I'll begin. हाय नेहा, तो ये रीयूनियन अच्छा लग रहा है, पता है, इतने टाइम बाद। हाँ, अच्छा तो लग रहा है। एंड अच्छा है, वो मूवी जा रहे हैं एंड श्रुति भी आ रही है, हमें उसे पिकअप करना है। अरे यार, बट श्रुति, आई डोंट लाइक हर। पता है कितनी नकचरी है वो। अरे व्हाट यू मीन बाय दैट? छोड़ना, 4-5 साल हो गए, ग्रेजुएट हो गए, इट्स ओके। नहीं यार, मुझे अजीब लगता है उसके साथ। ठीक है, देख, मुझे ना कल की मीटिंग का भी तुझे बताना था कि हम लोगों ने क्या क्या बताया था, यू नो। एंड देन ना देयर वाज, मतलब ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, तो ध्यान तो है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, मेरा ख्याल उसी में ही है। बट व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि हमें, पर मुझे ना, आई डोंट वांट हर। टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू नो ना, इस कॉलेज टाइम्स हर चीज़ में, मैं जो भी बोलती थी बीच बीच में ना कट करती थी मेरी बातें। Look who's talking. कब से तू मेरी बात काट रही? ठीक है, चल छोड़। ये हाय श्रुति। Hi Archana. Hi. Hi Neha. How are you? Long time no see. Yes. By the way, Neha, I brought your favorite chocolates from Australia. Oh, Here you go. thank you. I still remember it so well. Oh nice. And आज हम लोग लिटिल कृष्णा का मूवी देखने जा रहे हैं ना? तो मैंने इसके टिकट्स भी ऑलरेडी बुक करके रखे हैं। Amazing, Just yeah. go and get it scanned, okay? Just give me 2 minutes. Okay. और उसको मेरा फेवरेट चॉकलेट याद था एंड उसने खुद ही मूवी टिकट बुक भी कर दिए। वही तो बोल रही थी, पीपल गेट मैच्योर, सब चेंज हो जाता है, थोड़ी ऑब्जर्वेंट बन, यू विल कम टू नो शी इज आवर गुड फ्रेंड। Yeah, it's done. Let's go. Let's go for the movie. Yes. हम कृष्ण लीला में, तो उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं स्वर्ग में इंद्रदेव का लूट कैसा है। ये ऋणी लोग आपके आभार प्रकट किए, बारिश करो। जी देवराज। वृंदावन में देख रहे थे और फिर वो इंद्र के पास वापस जाते हैं। देवराज जी, सुनिए इस कलाकार को, आप सचमुच बहुत शक्तिशाली हो। स्वर्ग का देवता इंद्र जो हूँ मैं। तो इंद्र की इस प्राइड को और भी ऑब्जर्व कर रहे थे। अब हम थोड़ा वृंदावन में चलते हैं। बाबा, ये सब किस चीज की तैयारी चल रही है? हम इंद्रदेव के लिए यज्ञ कर रहे हैं। बाबा, हम इंद्रदेव के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ करते हैं ताकि वो हमें बारिश दे। बाबा, क्या हम कंस को टैक्स देते हैं? क्या उसी तरह इंद्र को भी टैक्स देना पड़ता है? अरे नहीं बच्चों, इंद्रदेव बुरे नहीं हैं, वो तो बारिश के देवता है। पानी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम ये यज्ञ इंद्रदेव के लिए प्रसन्नता के लिए करते हैं। परंतु ये तो उनका कर्तव्य है, वो तो भगवान विष्णु उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्ण, ये बहुत पुरानी कथा है, हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। और यमुना के क्यों नहीं? तुम सही कह रहे हो कृष्ण, परंतु
विष्णु है जो इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्णा बिल्कुल सही कह रहा है। सभी देवता भगवान विष्णु के आदेशानुसार ही कार्य करते हैं और वैसे भी वेदों में इंद्र के लिए अलग से यज्ञ का कोई विधान नहीं है। हम ग्वाले हैं, हमारी असली संपत्ति गाय है जो भोजन के लिए निर्भर करती है गोवर्धन पर्वत पर। हम भी कई चीजों के लिए गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करते हैं, तो इसीलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। मेरे वृंदावन के प्यारे वासियों, हम सबको मिलकर गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। आप स्वयं ही देखिए गोवर्धन पर्वत के इन चमत्कारों को, जो वृंदावन का जीवन है। हमारी गाय जो इसके जंगलों में घास खाके हमें मीठा मीठा दूध देती है, इसकी झरने हमारी प्यास बुझाती है, इसके मैदानों में हमारी फसलें और फल उगते हैं, इसके लकड़ी से बने हुए घर हमें रक्षा प्रदान करते हैं। तो मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। सही कह रहे हो कृष्ण, ये सब इंद्र की कृपा नहीं है, गोवर्धन की कृपा है। तो मित्रों, अपना चढ़ावा एकत्रित करें, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। श्री गोवर्धन की जय, जय। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे पहले कृष्ण ने ध्यान से उनके भक्त इंद्र को भी देखा, सुना कि कैसे उनका प्राइड बढ़ रहा था। फिर उन्होंने ब्रजवासियों की बातें भी सुनी, और ब्रजवासी तो इतने प्यारे हैं कि नंद महाराज और सारे तो ये था लिसन एक पैरामीटर। फिर उसके बाद कृष्ण ने अब 3 लोगों को एड्रेस किया है, वो था LOVE का O, ऑब्जर्व, यानी उन्होंने इंद्र की प्राइड, ब्रजवासियों का प्रेम और गोवर्धन का इतने सारे जो एफर्ट्स है उसे ऑब्जर्व किया और डिसाइड किया कि कैसे उसे वेरी हाईली रेसिप्रोकेट करना है। अब देखते हैं कि स्वर्ग में क्या कोलाहल मचा है। ये तो बड़ी अचरज की बात है। ये नहीं हुआ, तुरंत इंद्र को सूचित कर रहा होगा। आइए संवर्तक, मेरे भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे का मेरे साथ आनंद लीजिए। देवराज, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये समाचार आपको विचलित कर सकता है। संवर्तक, अब ये मत कहना कि तुमने अपने तूफान से एक और गांव को डुबा दिया। ये उपहास अपने मन से निकाल दो। देवराज, परंतु ये समाचार आपको क्रोधित हो जाओगे आपसे इस समाचार से। वो नंद के पुत्र कृष्णा ने ब्रजवासियों को कहा है कि गोवर्धन आपके बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। क्या गोवर्धन पर्वत? उन्होंने मेरी बात ना मान के तुच्छ से पत्थर की पूजा करना शुरू कर दिया। इस नादान बच्चे के बहकावे में आए हुए वो बच्चे के बहकावे में आके चलते ही पछतावा होने वाला है। कृष्णा, देखो इंद्रदेव तुम्हारे वजह से क्रोधित हो गया है। हमें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। आप सब ठीक कह रहे हैं, ये सब मेरे सलाह के कारण ही हुआ है। कृष्णा कभी भी हम पे या वृंदावन पे आज नहीं आएगा। सही कहा, मेरा आपके प्रति जो प्रेम है वो इंद्र के क्रोध से भी कहीं बढ़कर है। मैं आपकी रक्षा अवश्य करूंगा। अब देखते हैं कृष्ण क्या करने वाले हैं। कृष्णा, देखो देखो सब यहाँ आएंगे। कृष्णा को धरती में निकल लिया है। अरे नहीं, ध्यान से देखो, कृष्णा ने तो गोवर्धन को उठा लिया है। अरे चलो गोवर्धन की शरण करें। चलो
गोवर्धन को उठाकर पूरे 6 दिन हो जाते हैं और संवर्तक देखता है कि वृंदावन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसके इस बरसात से और बादलों से। और फिर संवर्तक दौड़ के चला जाता है इंद्र के पास। देवराज जी, आपके योद्धाओं ने 6 दिन 6 रात पूरी बारिश, आग जैसी बिजली कड़क रही है और वर्षा धुआंधार हो रही है। काशी ऐसा मनुष्य ने दृश्य कहीं देखा नहीं होगा। संवर्तक, तुम्हारी आंखों को भ्रम हुआ होगा। 6 रातों से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। आप स्वयं देख लीजिए देवराज जी। ऐसे कैसे हो सकता है? देवराज जी, लेकिन ये सच है, आप स्वयं देख लीजिए। हम परस्तु। ये क्या हो रहा है? वज्र के प्रहार के बाद इंद्र समझ जाते हैं कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे और वे फिर स्वर्ग जाते हैं। और ऐसे 7 रात कृष्ण ब्रजवासियों के साथ बिताते हैं। गोवर्धन को भी उठाते हैं और गोवर्धन को भी प्रसन्नता देते हैं और इंद्र का घमंड चूर कर देते हैं। फिर देखते हैं कि इंद्र ब्रजवासी सभी फिर 7 दिन 7 रात के बाद वापस चले जाते हैं अपने गांव की तरफ और कृष्ण वहां अकेले होते हैं। तब इंद्र उनके पास सुरभि गैया के साथ आते हैं। देवराज इंद्र, मैंने देखा कि आप मुझसे कितना स्नेह करते हैं, इसीलिए तो मेरे इतने प्रतिकार के बाद भी आप मुझसे यहाँ मिलने आए हैं। कृष्ण, प्रतिकार तो मैंने किया है। मुझे घमंड हो गया था अपनी शक्तियों का। मैं आपके सुरभि के साथ आया हूँ। कृपया मेरा अभिषेक स्वीकार कीजिए। तुम कुछ और कहना चाहते हो? प्रभु, मेरी शक्तियों पे मुझे बहुत घमंड हो गया था। मैं भूल गया था कि जो शक्तियाँ मुझे मिली थी वो मुझे आपसे ही प्रदान हुई थी। कृपया मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मैं जानता था कि तुम्हें तुम्हारी शक्तियों पे अहंकार हो गया था। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारा घमंड तोड़ सकूं। जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। इस प्रकार से इस गोवर्धन लीला में हम देखते हैं कि कैसे पहले कृष्ण ने लिसन किया टू एवरीवन, उसके बाद ऑब्जर्व किया, देन ही डिसाइडेड वेरी हाईली टू रेसिप्रोकेट एंड देन उन्होंने जो एंडेवर्स किए टू रेसिप्रोकेट विद ऑल द 3, दैट इज गोवर्धन, ब्रजवासी और इंद्र। इससे कैसे हम लोग मेरा नेक्स्ट वीक बर्थडे है, तो आई जस्ट वांट टू इनवाइट ऑल ऑफ यू, प्लीज मेरे घर में आ जाओ। श्योर श्रुति, श्योर, यस वेलकम। चलिए, ओके। तो फिर नेहा, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? चलो बाय गाइस, बाय। मतलब शी इज कम्प्लीटली चेंज्ड। वो बहुत स्वीट और रेसिप्रोकेटिंग हो गई है। शी इज गिविंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो वही ना, हमें पहले ध्यान से किसी को सुनना चाहिए, फिर उसके एंडेवर्स को भी ऑब्जर्व करना चाहिए, एल को। फिर हमें ना वेरी हाईली रेसिप्रोकेट करने की कोशिश तो करनी चाहिए। एंड फाइनली ई, हमें भी एंडेवर्स, एफर्ट्स डालने चाहिए। टू गेट लव वी हैव टू गिव लव। समझी? ये था आज की गोवर्धन लीला का टीचिंग। थैंक यू। हरे कृष्णा। गर्ल्स, हम लोग आज यहाँ सेलिब्रेशन के लिए आए हैं कि लाइब्रेरी में आए हैं? एक बार जोरदार तालियां हो जाए गर्ल्स, अच्छे से सुनाई देना चाहिए। तो आप लोगों को आज ये ड्रामा देख के क्या समझ आया? अभी आंसर्स चाहिए, बिकॉज ये जो फेस्टिवल है यादगार होना चाहिए। तो हमें शांत नहीं बैठना है, हमें आज बोलना है। प्लीज, आप लोगों को क्या समझ में आया? प्लीज अपना हाथ उठाइए, फटाफट से हम देखेंगे कि आज हमको ड्रामा से क्या समझ में आया। क्या था आप लोगों का की टेक अवे? कोई भी आंसर नहीं करने वाला आज?
कुछ तो की टेक अवे होगा आप लोग का आज ड्रामा से। बढ़िया। और क्या समझ आया आप लोगों को आज? लास्ट में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लाइन कही थी, किसी को याद है? लव के बारे में एक उन्होंने लाइन कही थी, किसी को याद है? एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। एंड इस ड्रामा से एक चीज और बहुत अच्छे से समझ आती है कि हम लड़कियां किसी से भी कम नहीं हैं, क्योंकि आज ये ड्रामा सिर्फ गर्ल्स का था एंड इट वाज ट्रूली ब्यूटीफुल। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसके लिए हम सबको काफ़ी टाइम से वेट है, द मोस्ट अवेटेड पार्ट। एंड वी आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, we are extremely blessed to have with us, and such personalities reminds us how beautiful is spirituality along with the practical life. So today we have with us Sukhavaha Mataji, whose words are going to bring clarity, compassion and spiritual depth. Along with her we have Haripriya Gopi Mataji, who will lovingly introduce our Mataji and share her inspiring journey. सच में इनकी गाइडेंस के लिए आज हम सब So she is disciple of Srila Prabhupada. So we are so fortunate to have her here. And since last more than 50 years, Mataji has been in this movement. Last 50 years, more than that, and she has been globally going around writing books, encouraging devotees how to naturally practice Krishna consciousness, preaching, book distribution, giving classes. So what can I say about Mataji is that she started coming to Bhaktivedanta Hospital, especially to serve the Barsana Eye Camp since 2007. Yes, Mataji? And we were like, she's Prabhupada disciple and we have to keep a distance, you know. Mataji is Prabhupada disciple, how can we approach her like that directly? So we used to just offer obeisance and run away. That time my daughters were really very small, and I remember one drama festival, Mataji just came and hugged me tightly. Yes, and I was so comfortable being with her, and I said, Mataji is not that person who sits on that higher seat, you know, she is somebody belonging to us and we can open our hearts to her, right? So that is how our bonding started, and Mataji started visiting us. We went to her room for counseling and she used to guide us, and Mataji at all levels is a very good counselor. Like, even though she is in US, we don't feel that distance from her because she is anytime available to us on the call. And what else I can say, Mataji, you are really great. And you have been actually, she has been regularly coming to Bhaktivedanta Hospital, and those employees and doctors who are serving there, we have been attending her seminars, lectures, classes very regularly. For Thane devotees, she is new, but I feel... can you help me move the table? If she wouldn't have been there, we wouldn't have crossed this journey so smoothly. So she was there at every step to guide us. Thank you very much, Mataji. Please continue today's session. Hare Krishna. Yeah, a little closer. Thank you. Sorry. I'm sorry. I'm sorry I made you move the camera now. Hare Krishna. Welcome, ladies. Thank you for inviting me here.
I'd like to just say a little prayer before I start. Namam Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatai. Thank you for coming, Srila Prabhupada. Without you, we wouldn't have this temple, and we wouldn't be sitting here together in your presence. Hare Krishna. So today's topic, what's today's topic? Does anybody know? What? Healthy relationships? Healthy relationships. So what do you think is the basis of healthy relationships? Let's hear from any of you ladies. I don't want to do all the talking, but if you have any ideas, you all have intelligence inside from Krishna. What's the basis of healthy relationships? I'm sorry? Respect. That's a good one. Mutual respect. Great, I'm going to start on that. So, where do we get respect? How do we learn respect? Anybody? How do we learn respect? Can we have an extra mic? That would be helpful. I can't hear so well. Hare Krishna, Mataji. It's like when we are there for each other during ups and downs, that's when we start respecting each other, because we get to know more about each other rather than just being there during good times. Yes, so when we're with somebody in both ups and downs, not just in the good times. What else is a foundation for respect? Anybody? Go ahead in the back there. Pass it back. Hare Krishna. When there's two people and even if they don't agree with each other, out of consideration, when they listen to each other's opinions and when they follow each other's opinions, just out of consideration, that is called respect. Okay, when we consider one another's opinions without fighting about it. Accepting the other person as they are. Accepting the other person as they are. Okay, so does anybody else want to say anything? Hare Krishna, Mataji. Communicating what they think rather than assuming things, and just communicating whatever is in their mind rather than Communicating some notions. rather than assuming. Boy, you ladies should be giving the class. You already have some very foundational things. Nice. So, yes, not making assumptions, having mutual respect. What did you say again? Accepting the other person as they are. There's one thing that you all haven't touched upon that I'd like to highlight. There's something missing, because everything you said has validity, but there's one thing that's missing. What do you think it is? Strong culture? Okay, culture. That's something. I mean, these things all have validity. You're not going to guess it. I can guarantee you're not going to guess it, because it's somewhere that we don't look. We don't look. It starts with our relationship with ourselves. Did anybody think that? No. It starts with our relationship with ourselves. If we don't accept ourselves,
we will be going to another person wanting to get acceptance from them, and they may want to get acceptance from us, and that may look like it works for a while until something happens, and then we're broken apart. If we don't have respect for ourselves, how can we truly respect another person? Because there's a person in the equation that we don't maybe fully respect. And then we may try to get respect from another person, and they may be trying to get respect from us. And then if something glitches, there's an upset. Understanding ourselves. If we don't understand ourselves, and we expect or assume that another person will understand us when we're talking, and they don't, we might get upset, but we may not even really exactly fully understand ourselves. So the foundation to having a strong relationship with others is how we relate to ourselves. Okay, this is a huge tip for you. So I'm going to give you a little visual here. Here is a little gopi girl. She's a young girl, and maybe 20. A lot of you are in your 20s, yeah? Something like that, 20-ish, more or less. So, it's hard to be a soul in a 20-year-old body. There's this whole world around us. How do we fit in? How do we behave? What should we do? And sometimes we don't know. We have a lot of fears and insecurities. But this is the part here. This is the girl that we show to the world. Our very best. We smile. We act very nicely. All the very best. You all know what I'm talking about. We show our best to the world because we want to be accepted, we want to belong, and we want connection. So we want to show our best, right? So this is the part that we show to the whole world. There's another part of us another layer of us. I hope I got the right. Okay. This one seems a lot smaller. This is the part of us that maybe our family and maybe our close friends know. They know that sometimes we're late, or sometimes we procrastinate. Sometimes we might, be jealous, something. And they know that about us, and we kind of know that about ourselves, but not too many people know that, just kind of our family. Then, there's a part of us that maybe only we know some things about ourselves that we don't really tell anybody. I see you girls shaking your head. I love it. Thank you for validating what I'm saying. Maybe we might tell our bestie friend, and then they don't become our best friend anymore, and oh my gosh, we're in a mess.
Now they know something deep, dark secret about us that we didn't tell anybody. So we like this part. Look how big this one is. We like this. We like everybody to see this, and we wish we could be this all the time, and we're upset that we can't be like this all the time. And this one is, okay, come on, you know, don't be so, you do it too, right? Right? You got that too. So we get a little defensive about it. And this one here is kind of a little bit more scared and insecure and hurt. And so you don't really want to tell anybody. But you do want to kind of tell somebody, so you only tell your bestie. But you wish you weren't like this, and you wish you didn't have these, and you wish you were like this all the time, 24/7, right? And then there's this part of us. This part of us is the part that even we don't know about. It's really underneath. It's our deepest, maybe even our childhood beliefs, fears, insecurities, hurts, sadnesses that we never got to tell anybody, and we just pushed them down and we kind of forgot about them. We don't remember them, but they're there inside of us, crying for our attention. And then underneath all of that, this is the soul. This is the real us all the time. So we respect this, and we show this, and we really like this, and we get really frustrated with ourselves when we can't be this all the time. And then when we do these, joy opening up and being more real. That I don't have to pretend this, I don't have to pretend, and I don't have to defend. I can just be more them of that sometimes, which is who we are. Inside, we have did the best they could, but